School of Social Sciences, Cluster University of Jammu, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज डिपार्टमेंट ऑफ हेरिटेज सोसाइटी पटना के संयुक्त तत्वावधान में आज के इस नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसका विषय है रोल ऑफ वीमेन इन प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, के इस आयोजन में उपस्थित समस्त सम्मानित अतिथियों, आभासी दर्शक दीर्घा के तमाम साथियों, शोधार्थियों, विद्यार्थियों, प्रेस मीडिया के बंधुओं, आप सभी को मैं प्रोफेसर अनंता संतोष द्विवेदी सादर वंदन अभिनंदन करता हूं। जैसा हम सभी जानते हैं, हेरिटेज सोसाइटी और क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू संयुक्त रूप से अलग अलग आयोजनों के माध्यम से इस मंच पर हम अपने दर्शकों के साथ लगातार जुड़ते रहे हैं। हम लोगों का पिछला आयोजन हिस्ट्री एंड हेरिटेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर वर्कशॉप हम लोगों ने आयोजन किया था, जिसमें भारत के अलग अलग जगहों से लोग जुड़े थे। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए इंटरनेशनल वीमेंस डे का यह पूरा ओकेजन सेलिब्रेट किया जा रहा है। कल उसका पावन दिन था 8 मार्च को, और उसी कड़ी में आज भी हम लोगों ने 9 मार्च को भी इंटरनेशनल वीमेंस डे के इस पावन अवसर पर इस विषय को नेशनल कॉन्फ्रेंस के रूप में हम लोगों ने सेलिब्रेट करने का एक मौका तमाम दर्शकों के बीच दोनों संस्थाओं द्वारा दिया जा रहा है। इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र में, एकेडमिक सेशंस में हम लोगों के साथ उद्घाटन हेतु प्रोफेसर बेचन लाल जी, माननीय कुलपति क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, आज इस सत्र की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। साथ ही साथ इस पूरे नेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन भी उनके द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ हम लोगों के साथ दो अति विशिष्ट स्पीकर्स, डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर्स हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर वीना पंत जी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हिस्ट्री, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ सिक्किम। साथ ही साथ डॉक्टर सुषमा त्रिवेदी जी, एसोसिएट प्रोफेसर, नवयुग पीजी कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। इसके अलावा इस पूरी मुहिम की रूपरेखा तैयार करने वाली ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, जिनके द्वारा स्वागत वक्तव्य दिया जाएगा, डॉक्टर सिंधु कपूर जी, जो वर्तमान में डिन स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है। आज के इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोट ऑफ थैंक्स डॉक्टर वसीम जी द्वारा दिया जाएगा, वो भी हम लोगों के साथ मंच पर जुड़े हुए। साथ ही ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के तमाम सदस्यों तथा इस ऑनलाइन सेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए स्टूडियो के तमाम साथियों, आप सभी हमारे साथ इस महत्वपूर्ण आयोजन में जुड़े हुए हैं। एक बार पुनः आप सभी का इस मंच पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आप सभी को प्रणाम प्रेषित करते हैं। दर्शकों से अनुरोध रहेगा कि आज के इस आयोजन के अंत में एक फीडबैक लिंक हम लोग प्रोवाइड करेंगे, उस फीडबैक लिंक को जरूर भरिएगा कि ताकि आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी स्वतः प्राप्त हो जाए। इस महत्वपूर्ण अवसर पर अत्यधिक विलंब न करते हुए बड़े ही आदर के साथ स्वागत वक्तव्य हेतु इस आयोजन की ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर सिंधु कपूर मैडम को बड़े ही आदर के साथ स्वागत करना चाहता हूं। आपका हार्दिक स्वागत है महोदय। धन्यवाद डॉक्टर आशुतोष जी। सभी को मेरा नमस्कार। On behalf of faculty and students of Department of History, School of Social Sciences, Cluster University of Jammu, and Intangible Cultural Heritage Department, Heritage Society, Patna, I extend warmest greetings to all our esteemed guests inside the studio and outside the studio at this national conference that is being held on the theme Role of Women in the Preservation of Culture. With immense pride, I heartily welcome our Honorable Vice-chancellor, Cluster University of Jammu, Professor Bechan ji. Sir, your gracious presence, as always, strengthens our commitment to popularize and document our cultural heritage. Venerable Sir, your unflinching support and valuable guidance is a blessing for us, and the School of Social Sciences has embarked on the academically active journey under your stewardship. So candidly, sir,
you have accepted our invitation to inaugurate today's online conference and preside over the whole session. We are indebted to your benign presence, sir, on this auspicious occasion. स्वीकार आपने हमारा निमंत्रण किया, रखा हमारा मान, कैसे करें कृतज्ञता, स्वागत है आपका श्रीमान, आपका हार्दिक स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन सर. I also take this opportunity to welcome our distinguished speakers, Professor Veenu Pant ji, Head, Department of History, Central University of Sikkim, and Dr. Sushma Trivedi ji, Senior Associate Professor from Navyug PG College, University of Lucknow. आप दोनों का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ कि जितनी आत्मीयता से आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और इस नेशनल कॉन्फ्रेंस को पर्टिकुलरली इस थीम को आपने संजोने में जो हमारी मदद की है, हम उसके लिए आपके आभारी हैं और आपको इस मंच पर हम स्वागत करते हैं. और मुझे पूर्ण आशा है कि आप दोनों का जो वक्तव्य रहेगा, जो आप दोनों का डिस्कोर्स रहेगा, उससे हमारे विद्यार्थी बहुत अच्छी तरह से लाभान्वित होंगे और उनको आगे इस विषय पर काम करने पर एक नई दिशा जरूर प्रदान होगी. आप दोनों का ही बहुत ही अच्छा इस विषय के ऊपर पकड़ रही है. मैं डॉक्टर वीनू पंत जी के लिए ये यहाँ पर बताना चाहूंगी that she has to her credit MPhil and PhD related to the history of medicine in modern India. बहुत ही अलग तरह का विषय है with special focus on the condition of indigenous medicinal systems in princely states of Rajputana during the British paramount period. With 3 books to her credit, she has already presented more than 35 papers at national and international platforms. She has already published 24 research papers and hosted 2 national conferences to give voice to the Right School of Writing History. She is also a member of Akhil Bharatiya Itihas Sankalan Yojana. She is also doing a project on fermented food and beverages of Northeast India, which is funded by Indian National Science Academy. She is working towards an active collaboration with Cavalier Dham Yoga Research Institute and Academy of Research in Indian Sciences to promote Indian knowledge system and its research. Similarly, we have amongst us Dr. Sushma Trivedi ji. Her areas of research interest include religious studies, engaged Buddhism, and gender studies. She obtained her PhD from Benares Hindu University, Varanasi in 1997 and has a teaching experience of more than 22 years. She has been awarded Major Research Project by University Grants Commission, New Delhi in 2014. She has also been awarded Associateship by Indian Institute of Advanced Studies, Shimla 2020, and also a Ashok Grant by Khyantse Foundation, USA in 2021. She has visited for various countries for academic purposes that include Sri Lanka, Thailand, Cambodia, China, Vietnam, France, Estonia. She has participated as presenter and resource person in more than 50 national and international conferences and seminars. She has published research work in reputed national international publications. To her credit, she also has 1 book and over 25 research papers. इतने ज्ञानी और गुणी लोगों को अपने बीच पाकर हम सच में मंत्रमुग्ध हैं. आप सबका पुनः एक बार स्वागत. On this occasion, I also extend a very warm welcome to our worthy registrar, Dr. Jitendra Khajuria ji, Dean Academic Affairs, Dr. Naveen Anand, Controller of Examination, Deans of all the faculties, staff, and students of Cluster University of Jammu. And more importantly, Dr. Anant Ashutosh Trivedi ji, who has always come forward to give wings to our intellectual activities. We value your collaboration, Dr. Anant. Organizing this online national conference on the said theme under the banner of Azadi Ka Amrit Mahotsav
And in continuation with the celebration of International Women's Day, the Department of History and Cultural Heritage wishes to record the indispensable relationship between women and culture and cultural heritage. Women are the real carriers of the preservation, conservation, and transmission of culture. Culture है क्या? Culture is definitely a stream of ideas, a conventional understanding, and communicable intelligence. Culture is also regarded as social heritage, a body of human achievements which are transmitted through our traditions. And women, we all know, are 50% of our total human resource. They are the true, most valuable, and prime carriers of our customs, practices, value system, rituals, traditions. In short, or in other words, all forms of intangible culture, which may include our food, dresses, ornaments, dance forms, drama, folklore, folk arts, oral traditions, and oral history. जब एक माँ अपने बच्चे को लोरी सुनाती है तो जाने अनजाने वो अपने बच्चे को अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति से अवगत करवा देती है। और जब एलिगेरीज की भी बात करें तो मान्यता यही है, धरती हमारी पृथ्वी हमारी माँ है और भारत हमारा देश भी भारत माता के नाम से पावन रूप से जाना जाता है। अगर हम वेदों में भी बात करें तो प्रकृति को वेदों ने नारी तत्व के रूप में ही जाना है और प्रकृति और संस्कृति को अगर आपस में कोई जोड़ता है तो वह काम नारी के द्वारा ही होता है। हम जम्मू कश्मीर में स्थित हैं and if I talk about particularly about my region, it is known as the seat of Shaktism. हमारा समाज शक्ति प्रधान समाज है, यहां तक कि मैं कहूं कि शक्ति के द्वारा ही हमारे रीति रिवाज निर्धारित हैं। तो ऐसे में इंटरनेशनल विमेन्स डे के अवसर पर अगर हमें कोई वेबिनार कॉन्फ्रेंस करनी थी तो ये एक बहुत ही ऑब्वियस सी बात थी कि हम कल्चर और उसके प्रिजर्वेशन में नारी के महत्व को जाने, पहचाने और हमारे स्टूडेंट्स तक इस बात को पहुंचाएं। हम अपने चीफ गेस्ट और अपनी दोनों वक्ताओं को सुनने के लिए आतुर हैं। मैं इसी के साथ आप सबका एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूं और इस पावन अवसर पर आप सब हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका सबका आभार प्राप्त करती हूं और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू डॉक्टर आशुतोष। थैंक यू वेरी मच मैडम। बहुत अच्छे से आपने बताई, बहुत ही रोचक बात कि कैसे माँ अपने बच्चों को लोरी सुनाती हैं और उस लोरी में हमारा फोक टेल, फोक सॉन्ग निहित होता है। इंटेंजिबल हेरिटेज का इससे साक्षात उदाहरण और कहाँ देखने को मिलेगा। तो महिलाओं का कंट्रीब्यूशन, हम लोग वहाँ से उन चीज़ों को देख रहे हैं। आज इस अवसर पर हम लोग उनकी उपलब्धियों को, उनके योगदानों को, हम अपने तमाम दर्शकों को, शोधार्थियों को इस दिशा में प्रेरित करने के लिए, ताकि वे महिलाओं के कंट्रीब्यूशन में अधिक से अधिक शोध कर सकें, इस आयोजन को हम लोगों ने साथ में किया है। अब वह अवसर आज आ गया है कि आज के हमारे अध्यक्ष महोदय का आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन में इस पूरे नेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया जाए उनके हाथों द्वारा, उनके कर कमलों द्वारा, कि ताकि इसकी एक छाप हमारे तमाम दर्शकों को, शोधार्थियों के बीच जाए और वे इस दिशा में प्रेरित होकर अधिक से अधिक कार्य कर सके। अब मैं बड़े ही आदर के साथ आज के हमारे अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर बेचन लाल जी, माननीय कुलपति क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू
आपको आमंत्रित करना चाहूंगा। आपका हार्दिक स्वागत है महोदय। Well, Professor Trivedi, Director General, Heritage Society, Dr. Professor Sindhu, Dean, Faculty of Social Sciences, School of Social Sciences, Cluster University, our two distinguished speakers, Professor Veenu Pant ji, Professor Trivedi, and many others who have joined virtually this program. At the very outset, I extend my cordial welcome to all of you to this webinar, which has been organized on a very relevant topic, as has been explained by Dr. Sindhu. I also thank the distinguished speaker to spare the time for this program. I, on my own, as well as on behalf of the Cluster University, I once again welcome them and thanks for accepting our invitations. I also congratulate each and everyone participating in this webinar on the very auspicious occasion of the Women's Day, which just was, in fact, celebrated globally yesterday. I also congratulate Dr. Sindhu for selecting this theme of this webinar on this occasion. When I say relevance, then I have a reason behind. In fact, the perception about the woman, if you scan the international scenario, the various kinds of concept and the perception, then you will find a clear-cut two dichotomy in the perception. एक तरफ वह विचारधारा है जहां महिला को केवल संतति प्रजनन को के द्वारा संतति बढ़ाने का एक साधन माना गया, उनको बहुत सारे अधिकारों से वंचित किया गया। बहुत अपने को सभ्य देश कहने वाले लोग अभी इंग्लैंड को कुछ एकाध दशक पूर्व ही उनको अभी वोटिंग राइट मिल पाया है। बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज में आप जानते हैं कि दे आर फाइटिंग फॉर देयर राइट्स, दे हैव नॉट बीन गिवन इक्वल राइट एज द मेन हैज। कुछ समाज में तो कुछ और भी, इसको यदि अन्यथा न लिया जाए तो उसको तो कुछ और भी एक भोग का साधन हम कह सकते हैं, इस रूप में महिला को लिया गया है। तो एक क्लियर कट एक वर्ग ये है, और शायद वुमेन्स डे की आवश्यकता उनको ज्यादा है इसकी। एक हमारा एंशियंट सनातनी एक परसेप्शन है वुमेन के बारे में, जहां हम प्रातः स्टार्ट ही हम करते हैं कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते करदवस। हम प्रातः उसके स्मरण और दर्शन से शुरू करते हैं। हम कहते हैं यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रम्यन्ते देवता। हम उनको शक्ति मानते हैं। ये ठीक है, हमारे यहाँ भी कुछ इस तरह की प्रवृत्तियां रही हैं। इवन काफी पास्ट हिस्ट्री में कह सकते हैं सीता का अपहरण हमारे यहाँ ही हुआ है, द्रौपदी का चीरहरण हमारे यहाँ ही हुआ है, परंतु ऐसा करने वालों को सजा भी हमारे ही समाज में दिया। वो सम्मान नहीं पा सके सारे शक्ति सामर्थ्य होने के बाद भी, उनको हमने तिरस्कृत किया है, हमारे समाज ने तिरस्कृत किया है, बहुत हेय भाव से देखता है, आज भी बहुत हेय भाव से देखता है। वो पूज्य नहीं हो पाए सारे शक्ति सामर्थ्य के बावजूद, केवल एक कारण से कि उन्होंने महिला को महिला के रूप में नहीं देखा। तो ये दो क्लियर कट कॉटनमी है, डाइकोटमी एकदम क्लियर कट परसेप्शन में है, और ये अब बताने की जरूरत है। जहां तक
वुमेन्स के परसेप्शन की बात, एक दूसरा जो कंपोनेंट इसमें रखा गया है कल्चर, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर। हमारे यहाँ डॉक्टर संधू ने बहुत ही अच्छे से एलोबरेट किया कि छोटे छोटे चीजों के माध्यम से हमारी माँ किस तरह से हमारे अंदर हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, और वह भी अच्छे ढंग से, अच्छी परंपरा, अच्छी संस्कृति का किस तरह से निरूपण करती हैं, किस तरह से वो हमारे अंदर डालती हैं। इसका यदि हम उदाहरण देखें तो केवल प्रत्यक्ष जन्म के बाद ही नहीं, सुभद्रा, और जरा अर्जुन को याद करिए, अर्जुन की पत्नी थी सुभद्रा जी, आपने अभिमन्यु का नाम सुना होगा। वो जब कोख में अपने रखी थी तब से संस्कारित कर रही थी, और चक्रव्यूह में कैसे लड़ा जाएगा, घुसा जाएगा, इसका पूरा भान वो कृष्ण जी उनको सुनाते हैं, उसके माध्यम से वो सुनती हैं, और सचेत जब तक रहती हैं वो सब कुछ ट्रांसमिट अपने होने वाले बच्चे में, अभिमन्यु में वो ट्रांसमिट करती हैं। जब वो थोड़ा सचेत न रह करके सोने की मुद्रा में आती हैं, शायद यही कारण है कि अभिमन्यु बाहर निकलने का रास्ता नहीं सीख पाए। और जब मैं इसको बायोलॉजी के लिए, मैं बेसिकली बायोलॉजी का आदमी हूं, और जब मैं बायोलॉजी के लिए सोचता हूं तो मैं पाता हूं बायोलॉजी में वेमन को वीक सेक्स नहीं कहा गया है, इट्स ए वेरी स्ट्रॉन्ग सेक्स। और इनिशियल जो सेल डिविजन्स होते हैं जो फीटस में ग्रो करती है जाइगोट, तो उसके अंदर जो इनहेरिटेंस है, जो रेगुलेशंस हैं जीन्स के, वो मदर द्वारा ही होता है, जो मदर्स के फैक्टर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजिंग फैक्टर्स हैं इनिशियल स्टेज के डेवलपमेंट में, that comes from the mothers, that comes from the egg stored materials, and that is the mother's part. Not only that, in later part जब वो सोचती है, न्यूरल सोच जब बनती है, उस हिसाब से फिजियोलॉजी होती है। इसीलिए शायद हमारे यहाँ बड़ा ही सोच समझ करके हम नारी को केवल एक संतति प्रजनन का एक आधार नहीं मानते, संतति के प्रोग्रेशन का हम आधार नहीं मानते, हम उसे ये मानते हैं कि वो सब कुछ हमारी है, वो मुझे बहुत कुछ सिखाती है, वो अन्न जन्मदाता है, वो अन्नदाता है शुरू में प्रारंभिक जीवन में, और जब हम बड़े हो जाते हैं, जैसा डॉक्टर संधू ने कहा कि पृथ्वी हमारी माँ है, प्रकृति सब हम कुछ पाते हैं, नेचर से वी गेट मेनी थिंग्स, वह भी वही से आता है हमारे, वह भी मदर प्रकृति माँ है, तो माँ से ही वो भी मिलता है। तो वो मेरी जनक है, मेरी पालक है, और मेरी रक्षक है। फिर मैं बायोलॉजिकली सेंस से कहता हूँ इनिशियल स्टेज का जो प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी डिजीजेज है, दैट इज थ्रू द इननेट इम्यूनिटी, वी कॉल इट एज ए इननेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देयर आर टू टाइप ऑफ इम्यूनिटीज देयर, एंड दैट इननेट इम्यूनिटी कम्स फ्रॉम द मदर्स। तो वो मेरे सब कुछ है, यह हमको बचपन से सिखाया जाता है, इसलिए माँ के बराबर, और वह सब कुछ ऐसा मान करके हम सीखते हैं, और वो मेरे लिए सब कुछ समर्पण कर दी। कोई प्रतिमूर्ति है तो वो माँ है, अपने सोसाइटी के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए, प्रकृति के लिए कितना व्रत रखती है। ये मतलब इन छोटे छोटे चीजों को जब हम पिरोते हैं तो मुझे लगता है कि वुमेन के अंदर कितनी इमेंस पावर है, और ये आज से नहीं, आदि अनादिकाल से आ रहा है। मैन कभी हिम्मत ही कर पाया, साहस ही नहीं जुटा पाया कि वो सारी चीजों को वो आगे ले जाए, कैरी करे। मैं जब अपने इतिहास में देखता हूं, अपने शास्त्रों में देखता हूं, तो मुझे कहीं नहीं दिखाई देता कि वो साहस कर पाया है। इसलिए वेमेन के बारे में अच्छा परसेप्शन, जो दुर्भाग्य से हमने कहा कि यद्यपि हमारे पूर्व में वेदों शास्त्रों में भी मिलती हैं घटनाएं, लेकिन उन एक्सेप्शंस को छोड़िए तो बाद के इन 1000 साल उसके बाद के कालखंड में देखेंगे तो बहुत विकृतियां आई हैं इस परसेप्शन में, हमारे महिला के बारे में जो सोच हमारी है। इसलिए पहली चीज तो आवश्यकता है कि महिला के बारे में परसेप्शन हम अपना बदलें,
और जब हम बदलेंगे तो फिर जब उसको देखना शुरू करेंगे उस नजरिए से, तो फिर दिखाई देगा कि अरे तो सब कुछ, हम आज जो कुछ भी है मेरा एग्जिस्टेंस, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द वुमेन, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द मदर एंड वुमेन। ये पूरा प्रकृति का एग्जिस्टेंस उस पर आधारित है। तो फिर हमारे सोच, हमारे व्यवहार, हमारे आचरण, जो आज विभिन्न तरह की विकृतियां समाज में दिखाई देती हैं, उन सब का निवारण होगा। इसलिए इस तरह के टॉपिक्स का बहुत ही ज्यादा महत्व है। और मुझे अच्छा लगा जब डॉक्टर सिंधु ने मुझे कहा, जबकि मैं बहुत सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं भी इस कार्यक्रम में रह करके पूरे कार्यक्रम को सुनना चाहता था, लेकिन आज ही मेरी डॉक्टर सिंधु से शाम को बात हुई है। कुछ लोग मेरे यहाँ आने वाले हैं, इस कारण से मैंने उनसे कहा कि मुझे मैं, जैसा आपने कहा है, मैं जरूर पार्टिसिपेट करूंगा, लेकिन शायद आई कैन नॉट स्टे लॉन्ग, मैं बीच में आई विल टेक लीव। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज की जो हमारी दो स्पीकर्स हैं, उनका बोधगम्य, उनका एक जैसा बताया गया, तो उनका जो लेक्चर होगा वो हम सब के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। वो केवल इंफॉर्मेशंस के लिए नहीं, बल्कि वो हमको इमोशनली जोड़ पाएंगी वुमेन और कल्चर से, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और सभी पार्टिसिपेंट्स से मैं ये कहना चाहूँगा कि सेमिनार्स, वेबिनार बहुत होते हैं, और आजकल तो ऑनलाइन ने एक अपॉर्चुनिटी भी दे दिया है कि बहुत सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स, कुछ विषय ऐसे होते हैं जो मन को छूते हैं, अंतर मन को छूते हैं। यह टॉपिक अंतर मन को छूने वाला है। हम सब उसको उस रूप में जब लेंगे तो सचमुच हम एक अच्छा मानव बन पाएंगे, और जब अच्छा मानव बन पाएंगे तो अच्छा सिटीजन, अच्छे नागरिक, सब कुछ इसके निहित है। हम सब कर लेंगे, हमारे उसके राष्ट्र प्रेम, विश्व के प्रति हमारा जो नजरिया, सब कुछ बदलेगा। इसलिए आज के इस रेलिवेंट टॉपिक पर एक अच्छा डेलिब्रेशन होगा, अच्छा डिस्कशन होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और विद दिस मैं वंस अगेन आई थैंक डॉक्टर सिंधु एंड हिज टीम, एज वेल एज डॉक्टर द्विवेदी, डायरेक्टर जनरल कल्चरल हेरिटेज, कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मुझे भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और मैं भी कुछ बोल सकूं। उन्होंने मुझे अवसर दिया, मैं उसके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, साधुवाद देता हूं। और अंत में मैं, यद्यपि मैं रहता तो अच्छा लगता मुझे, लेकिन जैसा मैंने कहा कि मेरे यहाँ कुछ लोग थोड़ी देर में आ जाएंगे, 7:45 के आसपास, तो मैं शुरू में तो पार्टिसिपेट करूंगा, सुनूंगा, उसके बाद मैं यदि if I take leave, then hope that you all will excuse me. Or once again, I thank each and every participant, and I hope this conference webinar will be a successful. And with this, I declare the webinar of today open. Thank you very much. बहुत बहुत आभार महोदय। माननीय कुलपति महोदय ने बहुत ही सार्थक, प्रेरक उद्धरणों का प्रयोग करते हुए आज के इस नेशनल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत उनके कर कमलों द्वारा की गई है। बहुत ही सुंदर मंत्रों का उच्चारण सर ने किया। क्राग्ते वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूलो स्थितो ब्रह्मा। तो किस तरह से, तो मुझे लगता है कि यह हमारे तमाम दर्शक जो देख रहे होंगे वह लक्ष्मी और सरस्वती के उनके गुणों को, उनके योगदानों को सब समझ रहे होंगे। और इस तरह से अब यह सत्र शुरू हो चुका है। अब हमारे डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर्स बारी बारी से आएंगे और अपने रिसर्च पेपर, उनका जो इस विषय पर रोल ऑफ वीमेन इन द प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर के ऊपर उनकी जो अपनी शोध है, उनका जो अपना कार्य है, वे हम लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे, ताकि हमारे तमाम दर्शक, पार्टिसिपेंट, शोधार्थी, विद्यार्थी उसका लाभ उठाएंगे। तो हम लोगों का जो क्रम बना है, जिसमें उस क्रम में सर्वप्रथम सबसे पहले हमारे साथ आ रही हैं डॉक्टर वीनू पंत जी। अगर उनका नेटवर्क अच्छा काम कर रहा है तो मैडम से आग्रह है, प्रार्थना है कि हमारे निवेदन को स्वीकार करें। और अगर मैडम का इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं है, मेरे ख्याल से मैडम हम लोग के साथ जुड़ गई हैं। आपका हार्दिक स्वागत है मैडम। जी मैडम, प्लीज। नमस्ते प्रोफेसर द्विवेदी, बहुत मुश्किल से जुड़ पाई हूँ, लेकिन शायद सिंधु का प्रेम इतना प्रबल है कि
इंटरनेट ने आखिरकार काम कर ही लिया। मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी कुलपति महोदय का, उनके बहुत ही खूबसूरत सुंदर आशीर्वचनों के लिए भी और उनकी उपस्थिति के लिए भी, और धन्यवाद आपका कि आपने इस सेमिनार को आयोजित करने का सिंधु के साथ कार्य किया और इस प्रेरणा के साथ हम सबको जोड़ा। सिंधु का तो खैर सदैव धन्यवाद है ही, उसका प्रेम इतना प्रबल है कि हिमालय के एक छोर से दूसरे छोर पे बैठे हुए इंसान को भी इंटरनेट के माध्यम से जोड़ ही ले रही है। और धन्यवाद। और डॉक्टर त्रिवेदी आपको भी नमस्ते इस की वक्ता के रूप में। जो आज का विषय है द रोल ऑफ वुमेन इन प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, एक्चुअली जिस समय सिंधु ने इस टॉपिक को मेरे सामने रखा तो द फर्स्ट इमेज दैट actually came into my mind was my early childhood, when I actually started learning certain things with my mother. And as I look back, I won't just say as I look back, actually even today, whenever Diwali comes, the best part of Diwali is for me, when I was a child, I was spending time with my mother. और कुमाऊं में उसको लिखना बोलते हैं हम लोग। एपण डालते हैं और उसमें गेरू में हाथ डुबोने के बाद चावल, पिसे हुए चावल से अंगुलियों को कितना टेढ़ा करना है और किस तरीके से लकीरें डालनी हैं और क्या क्या उसमें मोटिव्स डालने हैं, ये सब चीजें बचपन में खुद माँ के साथ सीखना, और आज उन्हीं चीजों को मैं अपनी बेटी को सिखाती हूँ। तो दिवाली ठीक है, त्योहार है, बहुत ही बड़ा उत्सव है हमारे जीवन का। हमारे देश के लिए तो सबसे बड़ा उत्सव शायद दिवाली ही है, लेकिन दिवाली में भी मैं पीछे देखती हूँ या आज भी अगर उसके लिए अगर इंतजार करती हूँ तो जो सबसे सुखद क्षण उस त्योहार के होते हैं वो होते हैं जब मैं उस कल्चरल हेरिटेज को जब सीख रही थी अपनी माँ से, अपनी दादी से, और आज जब सिखा रही हूँ अपनी बेटी को, और आशा करती हूँ कि वो जब उसकी बारी आएगी तो अपनी बेटी को सिखाएगी। So, this was the first thought that came to my mind when I thought about the role of women in preservation of culture, because culture or heritage or what we call history of any nation or any land is not just the tangible part, not just something which can be touched, which can be seen, but it is also that intangible part which which passes from one generation to another through so many folklores, folk tales, and through all these certain aspects of your cultural life which are actually very important, but are somehow losing importance in the present day metro lives or in the present day rush of living in the modern world. And that is where the role of women in preservation becomes very important. This is the actual aspect of it, but as a historian I would also like to express my pain in the fact कि हमने बहुत सारी चीजों में, मतलब जब हम हिस्ट्री पढ़ते थे एक्चुअली सबसे पहली बार जब इस बात का एहसास हुआ कि वो हिज स्टोरी है उसमें हर गायब है तो बहुत बुरा लगा था। लेकिन ये चीज एक लेक्चर में हमारी एक प्रोफेसर ने बोला, उन्होंने बड़ा बड़ा हिस्ट्री लिख दिया था और बोला इसमें मिसिंग क्या है, तो हमको लगा स्पेलिंग तो सही लिखी है, मिसिंग क्या हो सकता है, HISTORY, अब हिस्ट्री तो लिखी थी, अब इसमें मिसिंग क्या है। तो शी सेड, अरे अजीब लड़कियां हो, सामने बैठी हो, तुम्हें इसमें हर दिख रहा है कहीं, तुम खुद को तो ढूंढो, दिस इज हिज स्टोरी, वेयर आर यू इन इट। And that was the moment that I realized, yes, that there are so many ways that a woman contributes in building of nation. The women contributes in preservation of culture, in continuation of culture, in preservation and continuation of heritage. But the whole aspect is that somehow it turns out to be a very thankless job, and nobody is ready to actually give her the due credit of what she is doing. और कहीं ना कहीं औरत का जो संपूर्ण जीवन इस विरासत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने में, सहेजने में और उसको संभालने में निकल जाता है, हमारी किताबों में, हमारे डिस्कोर्सेज में
कहीं ना कहीं उसको उसका दर्जा उसकी जो सही जगह है उसको देने में जो कमी है, मैं वाकई धन्यवाद कर रही हूँ सिंधु आपका और अनाशुतोष जी आपका कि आपने इस टॉपिक को आज सामने रखा कि जो ये नई जनरेशन है आज हमारे सामने बैठी है, हमें सुन रही है, उनको ये चीज समझ में आए दैट women plays an immense role not only in creation of society, not only in continuation of social practices, but also through the continuation, through her insistence in continuation of social practices, she is also playing a very massive role in preservation of culture. Culture is not often what we what we visualize to be something which we can see or touch. कल्चर में जो इंटेंजिबल, बहुत सारी कहानियां हम आज भी लिखते हैं, दादी और नानी की कहानियां लिखते हैं, दादा और नाना की कहानियां नहीं लिखी जाती हैं, बोली भी नहीं जाती हैं। ऐसा नहीं है कि दादा या नाना कहानी नहीं सुनाते, मुझे सबसे ज्यादा कहानियां मेरे मामा ने सुनाई थी, लेकिन फिर भी जो असल में जो बात है वो यही है कि वो जो फोकलोर्स का, फोक टेल्स का जो प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन और कंटिन्यूएशन है, जो हैंडिंग ओवर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन है, वो दादियों और नानियों के साथ उन सर्दी भरी रातों में गर्म रजाई में घुस करके कहीं अलाव जला हो और हम चुपके से दुबक करके दादी के पास चले जाएं और कहें दादी आज एक कहानी सुना दो, तो वो जो कहानी है वो कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती हैं, वो असल में हमारे इतिहास का एक हिस्सा होती हैं, हमारे उस इतिहास का एक हिस्सा होती हैं जिसे कहीं ना कहीं हम किताबों में रखना भूल गए हैं। और वो दादियां और नानियां जो हर पीढ़ी को उस इतिहास को दोहराए चली जा रही हैं, तो दोहराए जाने वाली उन कथाओं में से इतिहास ढूंढना तो इतिहासकारों का काम है, लेकिन उस इतिहास को हमारी हर पीढ़ी के लिए जीवित रखना औरत का काम था, जो उसने बहुत कुशलता से किया है। उसके अलावा फोक डांसेस, फोक सॉन्ग्स कितने सारे हमारी विरासत को सहेजे हुए हैं, और वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी एक औरत के माध्यम से ही आगे जाते हैं। आप घरों में फोकलोर्स तो ठीक है कि दादी नानी से सुनी, कभी बाहर जाकर के किस्से कहानियों में भी सुनी, लेकिन जब बच्चा सबसे पहले घर में कोई त्योहार आता है और उसके लिए पर्टिकुलर डांस के लिए तैयारी करनी होती है, तो घर की औरत ही उस बच्ची को उसके पर्टिकुलर स्टेप सिखाती है, उसके लिए ड्रेसेस क्रिएट करती है। हाउ योर मदर ड्रेसेस impacts how you dress, how your mother cooks impacts how you cook, how your mother cares for impacts how you care for the other generation. So all these are very strong indicators of a very strong presence of women in the preservation of culture and as well as continuation of culture. But unfortunately, I'll come back to that point, that somehow whenever we look into the aspects of where we can say the tangible part, or where we can say the readable part of history, or the readable part of philosophy or culture, then we find that her is strangely missing there. So we do understand कि औरत की जगह क्या है, ये भी हमें समझ में आता है कि औरत अपने आप में कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है इन सब चीजों में, लेकिन उसके बावजूद उसको उसका दर्जा देना और उसको उसकी जगह देना, ये कहीं ना कहीं हम भूल गए हैं। यूनेस्को ने कुछ समय पहले इंटेंजिबल हेरिटेज पर अपना कुछ सेमिनार्स किए थे, कुछ काम किया था, और इंटेंजिबल हेरिटेज की जब बात आई थी तो यूनेस्को भी कहीं ना कहीं वापस पलट के औरतों पे ही पहुंचा था, बिकॉज व्हेन दे रोट अबाउट द इंटेंजिबल हेरिटेज एंड इट्स कंटिन्यूएशन एंड इट्स प्रिजर्वेशन, then they emphasized on the very strong and prominent role which the women plays in the family, in the society, in the nation, and in the cultural aspects of a nation in preservation of that intangible heritage. So right from thankfully there is someone who is trying to point that out, but the fact is that how do we recognize, how do we understand, but and how do we actually honor the women, because women इतना बैकग्राउंड में है कि उसको ऑनर करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी मुश्किल है कि हम किसको पहचाने, बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ इंटेंजिबल, then intangible is certainly something which has no face, and that is why it is not recognized as a strong part of culture, but not being recognized as the continuation of culture
that is the problem of the society. That should not be the problem of the women, who is playing a very strong role in continuation of that culture. Then today, when we look into the society, when we look towards the youth of the society, what we find is that the nuclear families, the structure of the nuclear families, the city life has impacted us so much that somehow we are losing that joint family touch. And because we are losing that joint family touch, we are also losing a very massive part of our cultural heritage. Why we are missing? Because mothers, probably working mothers, they are busy. I'm not blaming, I'm also a working mother. I'm not blaming a working mother to be busy in creating a career, but obviously that is her productive life. She has to make a career for herself. She has to go out and give her best to the society. But then there are other women in the family who would pass on the cultural heritage to the next generation. And because that connection is somehow getting lost, we are finding that the cultural heritage, the intangible aspects of cultural heritage, we are losing them. So what is more important right now is acknowledgement of role of women in the preservation of culture, as well as giving her a place, providing her a place where she can pass on to whatever she has learned till now. So I know intangible culture is never a part of any of our taught courses. It is not even a part of, most of the time it is not even a part of our projects. But I think yesterday Sindhu was involved in some kind of project where she was working on intangible heritage, and she was working with the folk arts and the preservation of folk arts. And so all these aspects, well, we have a new education policy now. Well, let us hope that through the help of educational policy, through the help of inculcation of these aspects of cultural heritage, which have not yet received due attention, and also the role of women. A woman need not be educated to be an educator. She, by virtue of being a woman, is an educator, because माँ ही तो प्रथम गुरु है. तो माँ के माध्यम से ही विरासत बचाई जा सकती है. माँ, दादी, नानी, इन्हीं के माध्यम से हम अपनी विरासत, अपनी कल्चरल हेरिटेज, अपनी हिस्टोरिकल हेरिटेज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो उनसे टच खोने के कारण हम खोते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसको हमें मुख्य धारा में लाना पड़ेगा. और सिर्फ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के माध्यम से नहीं, कहीं ना कहीं उनको उठा करके, अगर बच्चे उनके पास तक नहीं जा पा रहे तो उन्हें उठा करके बच्चों के पास लाना पड़ेगा. और हो सकता है किसी दिन हमें दादी नानी की कहानियों की ही एक क्लास लगानी पड़े, लेकिन आई थिंक दैट इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड that just teaching nursery rhyme to a child in school is not enough. The child needs to be connected to the cultural heritage of his own land, of his or her own culture, and that particular aspect can be possible only if the child is somehow, if not naturally, then even if artificially, connected to his or her own roots. And that is possible when we give due credence to the role of women in preservation and continuation of culture. सिंधु, मैं अगर अपनी वाणी को यहीं पे विराम दे दूं तो, क्योंकि मेरा इंटरनेट फिर फ्लक्चुएट कर रहा है, वो मुझे वार्निंग दे रहा है और मैं कहीं बीच में ही बंद हूं, तो उससे अच्छा है कि मैं इसी समय सबसे क्षमा मांग लूं कि मैं बहुत अंदर बाहर हो रही हूँ इस पूरे सिस्टम के. और रशीद जी, आपको भी मैं धन्यवाद कहना भूल गई थी इस पूरे इस आयोजन के लिए. और मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी इससे पहले कि इंटरनेट मेरी वाणी को विराम दे दे. और धन्यवाद सिंधु, धन्यवाद कुलपति महोदय, और अनाशुतोष जी, आपका भी धन्यवाद. सिंधु, मैं ये चाहूंगी और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कुलपति सर से कि अगला जो तुम्हारा आयोजन हो वो जम्मू में हो, ताकि ना इंटरनेट की प्रॉब्लम हो और ना तुमसे दूरी की कोई समस्या हो. बिल्कुल बिल्कुल, साधुवाद आपका डॉक्टर वीनू पंत जी. आपने जो एक रेफरेंस दिया
मंडे और ट्यूसडे 2 दिन हमारे स्टूडेंट्स जो थे, हमारी स्कूल की दीवारों पर उन्होंने परोला आर्ट की प्रैक्टिस की, और ये हमारा बहुत पुराना लुप्त होता हुआ आर्ट है, और बच्चों ने बहुत सुंदर बनाया, और सबसे बड़ी बात है उनको उसमें खुशी की अनुभूति हुई। तो मैं आपके माध्यम से मैंने ये सबके साथ यहाँ पर ये चर्चा की, क्योंकि आपने उसका रेफरेंस दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर आशुतोष जी, ओवर टू यू। बहुत बहुत आभार प्रोफेसर वीनू पंत मैडम। आपने बहुत ही कम समय में ही लेकिन बहुत गंभीर बातें आपके द्वारा बताई गई कि कैसे आज भी हमारे समाज में, हमारे जीवन पद्धति में दादी और नानी की कहानियां सुनाई जाती है, क्योंकि बचपन में हम वही देखते रहे हैं, सुनते रहे हैं। उन कहानियों में फोक टेल, फोक लोर की कई सारी जो इतिहास परक घटनाएं भी रहती है जिसको डॉक्यूमेंट करने की जरूरत है। आज भी हमारा इंटेंजिबल हेरिटेज सिर्फ इनॉग्रेशन के लिए और वैलिडेटरी फंक्शन के रूप में यूज हो रहा है। इस पे ध्यान देने की जरूरत है ताकि उन इंटेंजिबल हेरिटेज को हम लोग एकेडमिक रिसर्च में मैक्सिमम लेके आए, जैसा बाकी हम लोग अपने सब्जेक्ट को लेके आते हैं। बहुत सुंदर संदेश मैडम आपने दिया है। डॉक्टर वीनू पंत मैडम, आपने, मुझे लगता है कि हमारे तमाम शोधार्थी इस विषय पर जरूर ध्यान दे रहे होंगे और वे अपना अपना विषय इसके तरफ लेके जाएंगे ताकि उस पर आगे वे शोध कर सके और अपना रिसर्च पेपर लिख सके। अब समय आ गया है कि हमारे आज के दूसरे महत्वपूर्ण डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर डॉक्टर सुषमा त्रिवेदी मैडम को आमंत्रित करने के लिए आपका हार्दिक स्वागत है मैडम। Thank you very much, Dr. Trivedi. And Namaskar, Honorable Vice-chancellor, sir, Dr. Sindhu Kapoor, Dr. Trivedi, Dr. Veenu Pant, and Dr. Wasim Rashid ji, for having me for this interesting conference. The topic of the conference, Role of Women in Preservation of Culture, becomes all the more relevant at the time of International Women's Day celebrations this is being organized. And this topic is actually, I think, very close to the heart of every woman, be it India, be it abroad. We all know that we play a very vital role in preservation and transmission of intangible cultural heritage, especially. But somehow we do not get kind of recognition that we need to get. And as a result of this, the process of transmission or preservation of those cultural heritage in which women play a very important role is somehow not officially recognized and not officially promoted. So today I'll be talking about women as agency and religiosity as conservation of intangible cultural heritage. So basically I'll be talking about intangible cultural heritage. Uh, when we speak about women as agency, this is a problematic agenda, officially speaking, because in folk culture or in our day-to-day life, we all realize that women are very important in transmission, conservation, and preservation of intangible cultural heritage. But when it comes to its recognition at official levels, it becomes a problem. So we all know that UNESCO is the apex body which issues guidelines. All the countries follow the guidelines issued by UNESCO in preservation in collaboration with their indigenous circumstances. So at the level of UNESCO, whenever this has been heatedly debated subject that there should be gender-centric rights for conservation of intangible cultural heritage. And when we talk about this issue, like that a special recognition or special distinct role of women should be recognized at official levels, there are certain views. Like UNESCO otherwise unofficially recognizes that women play a very important role in preservation, in transmission, and they're actually in command of protection of some specific kind of intangible cultural heritage. But this topic is discussed, and when the landmark 2003 Convention on preservation and safeguard of intangible cultural heritage was being passed, before that convention and after that convention, then some of the amendments were introduced in that convention. Uh, this has been consistently discussed. Gender dimension of the intangible cultural heritage was consistently being discussed.
but to no avail. Why? But to no avail because uh, there is an authorized heritage discourse being followed by UNESCO. So the problem arises from a relationship between UNESCO and UNO. We all know that both these two bodies are different in nature and their functioning is different, but UNESCO is affiliated to its parent body, United Nations Organization. UNESCO works in the field of culture and education, whereas United Nations, that is basically a political body, and its basic function is to upkeep the world peace, to restore the world peace, and to upkeep the world peace. In that sense, unconditionally, UNESCO follows a policy of non-discrimination and equality. When it comes to gender dimension, in UNESCO or in the world debates, the gender dimension is always intertwined with cultural rights. So, the cultural rights itself, the liberal democratic thinking believes that cultural rights are discriminatory because they discriminate. Any specific right given to a community, be it gender based or be it race based, they are actually discriminatory. And if the cultural rights are discriminatory, they stand against human rights. They are infringement of human rights. For that reason only, the UNESCO is always hesitant in accepting the special role of women in promotion and conservation of intangible cultural heritage. As a result, because of this, because even some of the uh, heritage experts who are working in the field of heritage, like the American scholar Susan Moller Okin, they also oppose gender-based rights in the terms of culture protection and preservation of cultural heritage, because they think that if we impart these gender-based cultural rights to women, ultimately they will be decided by the male and they will work at oppression of women. So for that reason, even the heritage experts are vehemently opposing the gender-based cultural rights or gender-based rights to the women in field of preservation and promotion of cultural heritage. Similarly, so at the UNESCO level, things are not very promising, and this can be seen. This is reflected in some kind of data also, because if we see the data issued by UNESCO, that from 2001 to 2009, around 166 new elements were inscripted, because the intangible cultural heritage traditions, in technical language UNESCO calls them elements, and their enlistment is known as inscription. So around 166 elements were inscripted, and out of which only 120 were gender silent. Gender silent, we all know gender silent means male dominated. Actually, it translates into being male dominated, and only nine elements were gender centric, and they were exclusively practiced by women. Similarly, the data for from 2010 to 2021, again we have 93 elements inscripted, and out of these 93 elements, 46 were gender silent, and only three were practiced exclusively by women. So this is the situation at UNESCO level, and there are around more than 100 elements inscripted. Only 14 from India, and only one element or tradition that is inscripted in UNESCO list. That is Kalbelia dance from Rajasthan, and that is only the women-centric tradition that is enlisted. These recognition from UNESCO or recognition from national and international bodies actually encourages the role of women and encourages a systematic development and organization of women's role in preservation and conservation of heritage. So we can see that at UNESCO level, there's things are not very promising. Not very promising because UNESCO is hesitant in light of human rights. It is hesitant in recognizing the role of women as cultural right. So maybe we'll have to women activists have to take up this topic, but this is also problematic because
even the feminists think that imparting cultural rights to women-centric traditions is anti-feminist. uh, because but it is very difficult to understand how come rights be oppressive or anti-feminist, because rights are claimed, they are not imposed, duties are imposed. So if we impart these rights to women, special rights as promoters and protectors of cultural heritage, or recognize these traditions, so I don't think they are going to be oppressive in any sense. So let us see what is the scene. Let us. This is actually attributed to the authorized heritage discourses, which are being hegemonized by American liberal thought, and they are just there is difference blind position taken by UNO, and to in adherence with this difference blind position, they are not at all ready to consider gender issues at the platform of UNO, and it is being followed by UNESCO. So it is still a far distant dream that we'll have some kind of recognition and special promotion from the UNESCO people for like in a position of preservator of cultural heritage. Uh, it is very interestingly, one scholar, R.J. Wilson, he says whenever the gender-centric issues are taken up at UNESCO, they are considered as niche issues, like ताक पर रख देना, महिलाओं के मामले जब सामने आए तो उन पे विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है, उन्हें ताक पर रख दिया जाए. So at the now let us explore possibilities at the national level. And when we see the possibility of profession of promotion of women's role in preservation of cultural heritage, intangible cultural heritage, we see immense possibilities in India. Immense possibilities in the category of that is identified by UNESCO, the category of social practices, rituals, and festive events. Because we have a very vibrant culture, our calendars are dotted with festivities around the year, and fortunately, Sanatan Dharma established centrality of women in religiosity and performance of religious rituals. Women take up all the Sanatan yagyas and religious performances. Most of them have women as mandatory participant with a husband, and this is made mandatory that all the yagyas are to be performed with along with his wife or life partner. And similarly, women has the right to perform and take up some of the religious functions separately on their own, and for the welfare of the family and for the welfare of their children, family, and all. Like there are many such rituals which they perform, many such like pujas they perform for the well-being of their family, for their husband, long life of their husband, well-being of their family, for their children, and even for their ancestors. So we can very safely say that women are there is a centrality of women in preservation of culture in religious sphere. Maybe sometimes there could be a question raised that this is especially feminist and progressive elements, they raise this question like, where is women as an individual in this religious performances? Is she only a medium for preservation or transmission of cultural heritage? So this is because we have a very Dr. Sindhu, just a minute. I'll put off my video because my laptop is on battery saver mode. I'll just a minute. We uh, um, feminists and progressive people, they ask questions that where is women is just used as medium because she is praying for her husband, praying for the children, and doing all sorts of rituals, performing all sorts of rituals. So this type of questions are raised because there's a grand negative narrative created against the dharma shastras.
so much so that we fail to notice the progressive elements within this dharmashastric tradition. Because when a wife prays for the family, wife herself is the central figure of the family. She is also one of the beneficiaries if the prosperity is brought to the family, if the family is having the children are having good life, if the husband is living long, she herself is one of the beneficiaries. She is not being used. She is not a medium. She is an end in herself. So, having said all this, now I will come. I'm preparing this ground because the next thing which I'm going to say might feel somewhat regressive to some people. So, I'm talking about the women centric traditions followed all over India. So, and these are observed in different manners at different time of the year, but the basic sentiment of all these festivals is same all all through the country. So when we talk about such rituals and such women-centric festivals, the first one that comes to my mind, or mind of all the women and probably men also, because they are also participant in those rituals, that is the Karwa Chauth festival. Thanks to Mumbai film industry, initially it was a festival celebrated from in North and Western India, but now it has acquired a pan-India character everywhere. Now I'd like to share a very interesting anecdote. Once on Karwa Chauth day, one of my relative girl was staying in a hostel. She was an engineering student. So I thought of that I was waiting for moonrise for puja. So I thought of delivering some of the festive food to her in the hostel. To my amusement, when I went to hostel, the entire rooftop of the hostel was filled with young girls, all preparing for Karwa Chauth puja. They were maidens, they were not married, but the charm of the festival is so much they couldn't wait till they get married. They said we are in relationship, we are praying for our boyfriends, we are praying to get a good husband. But because this festival allows us so much of importance to get dressed and pray, I mean, this authority, it gives us this power, so we enjoy doing this. So it is more of a cultural than a religious thing. And similarly, we have other festivals. As I said, that all over in India, these festivals are being observed. Similarly, for the long life of a husband, there's this Vata Savitri Puja performed in northern India. Similar kind of functions, rituals are performed in Maharashtra, that is Mangala Gauri Puja. There is Varalakshmi and Thiruvathirai festival or puja in South India. They are all meant, the women fast and women do all sorts of pujas and prepare goodies for the festive occasion. And similarly, there are many vrats and pujas for children. And then the Chhat Puja comes to our mind. Anantashutosh Trivedi ji are very much familiar with this. Like the whole Bihar and Eastern UP is frenzied at the time of Chhat Puja. Wherever the sun is working, even abroad, they'll come back to their native place to participate, to help out their mothers in Chhat Puja. And uh, there's another puja called Jivit Putrika and Sakat, observed in northern India. In Tamil Nadu, there's one festival that is Makiram, in which mothers observe this festival for long life of their sons. In Orissa, there's Pua Jintua puja. So all these festivals, when we look at them, these all these festivals are actually more of cultural than religious, because they involve like community participation. They involve the participation of entire family, but the central figure is women of the family. Sometimes people think that this is a matriarchal, this is kind of misogynist prescription of Smritikaras to exploit women. To but it is, or maybe it is decried that when women have this. On part of women, they are involved in slavish, superstitious adherence to these rituals. But
you see, when you see the dharmashastras, and when you go deep into the traditions, they are never forced. Women are never forced to, they are expected to, but they are never forced to observe these rituals or these pujas and vrats. uh, some woman who is not willing to take up the fast of Karwa Chauth, she is not ousted from the family. She is not deprived of her rights in the family. Maybe society, the societal pressure is there, but the family can, this is what I mean to say is, what I mean to convey is that it is these rituals are projected in a very bad light, that they are not actually exploitative. They in some sense they empower women, they establish their authority over the family, and they, and in basic sense they actually carry forward the tradition, they actually carry forward, transmit the tradition from one generation to another generation. So all these like festivities, they and very important aspect is that they address, they are rituals, they are being performed since centuries, but they actually they are very relevant at the present times. They address to most of the concerns of the modern society. uh, and when it comes to environment, first we see environment. Most of the rituals, they use the material which is biodegradable. They do not pollute atmosphere. In some of the festivities, it is required that the idols of the gods and goddesses are made from fresh mud, and that is easily dissolved with the atmosphere. So this is one thing. Second, most of the in these ritual, women-centric rituals, they are related to nature worship, trees, plants, and holy waters. And we all know during the time of Chhat Puja, cleaning of rivers, ponds, and ghats become a political issue. And all the political parties are more than eager to help out the devotees, the women devotees. So they address to the environmental issues. Similarly, all these kinds of pujas are related to some or the other kind of trees, like banyan tree, peepal tree, neem tree, tulsi. So all these trees are to be maintained in the vicinity of the localities of the villages. And or more importantly, whenever a tree is worshipped in Indian tradition, people refrain from cutting that tree. So this is another form of conservation, protection of environment, which women as agency facilitate, and women as agency are very strongly uh, uh, doing their playing their role in this sense. Second is the second is preservation of traditions, because these rituals, they are not just a performance, they are not just ritual fasting or performance of puja. They involve an entire cultural paraphernalia, that like Dr. Veenu Pant was talking about epan. Epan or rangoli is integral part of all the pujas, and these intricate rangolis, they are actually, they give birth to many many art styles. Like I think Varli art style of Maharashtra and Madhubani art, especially Sohrai art, all these arts derive from this rangoli tradition of India. And interestingly, all the festivals have their separate kind of rangolis. Not so there are varieties of rangolis, there are varieties of mediums through which these rangolis are prepared. So this is a very important art form which needs a preservation, and this is preserved. And like Dr. Veenu Pant said, she's teaching these to her daughter, and she expects that her daughter will teach this to her daughter. So this is the kind of link, transmission that is continued, that will be continued with the observation of these festivals. Similarly, when these uh, art forms paint some of the um, very specific intangible heritage of food is protected or preserved by these festivities, because every festivity has a special kind of food preparations, right from North India to South India. On these occasions, we prepare a specific kind of food that is offered to the god, and that is offered to others as prasadam. So this is another intangible heritage which is being preserved by women, which is being protected, and which is being transmitted by women.
The most fascinating part of this women-centric rituals or traditions, which I find, is secularism. These all festivities are secular in nature. Karwa Chauth performance, any woman or any like Vat Savitri or Chhat Puja, any person from Hindu society, uh, from Chaturvan, they can perform these pujas. There is no barring. There is no exclusion of on the basis of caste or the community in all these functions. So they bring together communities, and they social cohesiveness is very much instrumental in these type of ritual observations. uh, there's one interesting episode in Orissa. There's one festival, this is that is known as Manbasa Gurubara. It is There's a legend that this festival was started by a Shudra woman. She wanted to observe a fast for long life of her husband. She went to Ma Parvati, and with consent of Ma Parvati, she started this observing this fast, and later on, it became very popular in Orissa, in all around the Orissa. So this is the beauty of women-centric traditions. They do not discriminate on the basis of caste, community, class. All women are welcome, embraced. Even the women for other community, they can also come and participate in these festivities. One of my Muslim colleagues, she said, I didn't want to, when I'm surrounded with Hindu women, they are preparing for Tej and Karwa Chauth. I don't want to be left out. So I may not worship their God. I may worship my God for long life for my husband, but I do buy new clothes, bangles, and dress up in all my fineries for this occasion because I don't want to be left out. And such people are gladly embraced by the women who are performing these pujas. So secularism is very important part of women-centric traditions, and because of this tradition need to be promoted. One Another aspect is dynamism of women-centered traditions. Uh, we have seen there's been lots of change, there are lots of alterations, and there are lots of exceptions and allowances in these traditions, because initially what a dadi nani were doing at their Kawa Chauth or their Chhat Puja, the present generation, we didn't do that. The present generation coming after us, they are not also observing those fasts in that manner, but still they are welcome. They are very much these moderations and the alterations are very much accepted within the traditional framework. So this dynamism is very important. This is not forced observation, or even technological advancements have been like accepted and adopted within the cultural fold. Like if you want to sight moon and in your city there's sky is overcast, you can ask someone to show the moon virtually to you on their telephones, on their phones, or laptop screens, and you can perform puja over there. So this kind of elasticity and this kind of liberalism is there in women-centric tradition. So uh, these women these traditions or these rituals which are women centric, they need an organized like preservation, because they are carrying forward the tradition, they are carrying forward the legacy, and they have this responsibility of transmitting this tradition to forthcoming generations. So we need to promote women, we need to recognize the special role of women, we need to assist them in the endeavors to promote cultural heritage. So I have a suggestion, like we if we want to promote this kind of intangible cultural heritage with women as agency, we can take a we can take an example from Japanese experience. Like we have these women centric traditions all over India, and we have different variations, we have different forms, but the sentiment, as I said, the sentiment is one and the common. Similarly, in Japan, they have a float festival that is known as Yamahoko Yatai. This Yamahoko Yatai is observed across Japan, in all islands, in all parts of Japan. In fact, and there are 36 variations of Yamahoko Yatai.
even each and every prefect had a different tradition, different kind of celebration. In some prefects, women are excluded from some part of the observation. In some prefects, men are excluded. So they, it's not that they are all the same, but they have, the Japanese, they have grouped all these, and they are more of like our Shobha Yatras, float festivals. So floats are pushed in water, and carriages are pushed on the ground, and they are accompanied by dance and music, and different kind of cards, crafts and martial arts and food preparations. So again, it's a kind of entire paraphernalia of this festival. So what the Japanese have done, they have like compile all these 36 variations of Yamahuku Yatai tradition, and they got it enlisted with UNESCO. And after the enlistment with UNESCO, now they have very like well organized network of local societies which look after this Yamahuku Yatai festival, its preparation, and the other parts of it. And now it has become a national festival, sort of national festival for Japanese, and it plays a major role in preservation of Japanese culture. So I would suggest we can also do this. We can, like Japan, we can group these women centric traditions, and we can organize, we can make a whole scheme of preservation and promotion of these women centric traditions. This is important because this is not promoting patriarchy, or this is not regressive that we want modern women to observe all these things which some find that they are not scientific, but actually they are scientific. And doctors, many of the doctors, medicine people are researching on this intermittent fasting tradition of India. So this, but actually when we provide them a platform, when we recognize these traditions, and we properly organize them, then this will facilitate proper documentation, because promotion of heritage, documentation is very important for promotion of heritage. So it will help proper documentation of legends, stories, uh, attached to these festivals. They will make a good anthropological study in future, material for anthropological studies in future. They will work towards preservation of music and folk elements, and other paraphernalia that is related to these functions, uh, because we have already lost a great deal in transition. As I said, these rituals performed 40 years back, these rituals performed 60 years back, and these rituals being performed in present, they have very different forms. I don't say that we should continue in toto, the thing in toto. No, we changes are welcome, but at least at which point the changes occurred, this has to be documented. What was previously done and what is being presently done, all these things need to be documented, because they form our invaluable cultural heritage. And second thing, what we need to do is that we should constitute committees. We should constitute some kind of committees or organization which actually have stakeholders and real practitioners within that communities. So they will be able to understand the ritual properly, and they will help in uh, preservation of cultural heritage, and basically recognizing role of women in promotion and preservation of intangible cultural heritage is very important, because they are the actual stakeholders, they are the actual practitioners. But when they are decided by outsiders, the other people, they cannot do justice to women centric cultural tradition. So with this proposition, with this suggestion, I'd like to end my talk, and thank you for having me for this interesting conference once again. डॉक्टर आशुतोष, अगर आप आज्ञा दें तो मैं बीच में Thank you. थोड़ा सा इंटरवीन करूं. What जी Dr. जरूर जरूर जरूर. what Dr. I- Sushma has just said and talked about the role of festivities as being recorded by women
in the preservation and transmission of our cultural heritage. Ma'am, I'm just adding what you have said, adding to it by saying that when we involve ourselves in the various vrat or festivities related to the vrat, somewhere we are also giving an impetus to the financial activity also. So, Yeah. beyond the religion, I think the cultural practices are very much interrelated with the finance aspect also, and that leads to the impetus to the otherwise sometimes slack markets. That is one aspect. And secondly, what you have just said about the intangible aspect, it is very important for us to understand that the women are the carriers of language also, the local language. Nowadays हम लोग हिंदी भाषा नहीं, अपनी लोकल मातृभाषा नहीं, हम अंग्रेजी होते जा रहे हैं, लेकिन अपने जो रूट्स हैं वो भूलते जा रहे हैं. तो माँ जो है सबसे पहले हमें मातृभाषा से भी अवगत करवाती है. तो डेफिनेटली हमें इस तरह से बहुत सारे ऐसे और आयाम हैं जिसमें women are the important and prime carriers of our intangible heritage. तो आपने बहुत 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 सुंदर तरीके से इस पूरे व्यवधान को, इस पूरी टॉपिक की आपने जो विवेचना करी है, तो आई थिंक माय स्टूडेंट्स वुड बी वेरी हैप्पी विद यू ऑन दैट एस्पेक्ट. और डॉक्टर वीनू पंत ने जैसे बताया, तो अगर हम इस चीज का पूरा निचोड़ माने तो ये है कि विमेन in an unaware manner, they are contributing in the transmission, they are contributing in the preservation. उनको इस चीज का एक्नॉलेजमेंट भी नहीं है और इस चीज की अवेयरनेस भी नहीं है कि वो इंटरजेनरेशनल, ये जो हमारा बेसिस ऑफ सोसाइटी है, हमारे ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स है, उसको पास ऑन कर रही हैं. तो इसी चीज को हम उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए आज ये हमने आयोजन भी किया. ओवर टू यू डॉक्टर आशुतोष. थैंक यू मैडम, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हमारा समाज जिस तरह का बना है, जो बनावट है हमारे समाज का, तो वीमेन सेंट्रिक रिचुअल्स हमारे यहाँ हैं. क्योंकि जितनी भी चाहे वो एकादशी हो, द्वादशी हो, रविवार का त्यौहार हो, चाहे जो भी त्यौहार हो, जीवित पुत्र का व्रत हो, मैडम बता रही थी, डॉक्टर सुषमा त्रिवेदी मैडम अलग अलग त्योहारों के नाम ले रही थी. उन सभी त्योहारों में अगर वे महिला नहीं होती तो हमारे कल्चरल हेरिटेज इस तरह से हम लोग आने वाली पीढ़ी तक वो इस तरह से नहीं आ पाता. अब तो धीरे धीरे ऐसा भी आ रहा है कि उनके साथ पुरुष भी उन त्योहारों में हाथ बटा रहे हैं. कभी कभी ऐसा सुनने का तो जो महिलाओं के लिए उपयुक्त त्योहार रहा है उसमें पुरुष भी भाग ले रहे हैं कि हम भी आपके साथ फास्टिंग करेंगे. ऐसा भी लगातार आए दिन अखबारों में देखने को मिलता है. तो अब धीरे धीरे लगता है पुरुष समाज भी महिलाओं से प्रेरणा लेके अपनी कल्चरल हेरिटेज को आगे बढ़ाने में आगे आ रही है. ऐसा संदेश मेरे ख्याल से आज के इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में जा रहा है कि धीरे धीरे तो इतना उनके योगदानों को हम बिल्कुल नकार नहीं सकते. लेकिन जरूरत है आने वाली पीढ़ी को, हमारे सुधार्थी को, हमारे विद्यार्थी जो है इस दिशा में और शोध करें और रीजनल रिसर्च करें, अलग अलग क्षेत्र में जो कल्चरल हेरिटेज है उसके ऊपर काम करें, कि ताकि हम बिल्कुल जो पीढ़ी हमारी है जो आएगी आने वाले समय में, तो उनको हम लोग सही से ट्रांसफर कर सके अपने कल्चरल हेरिटेज को. तो यही इस मेरे ख्याल से आप सभी विद्वान जो इस हम लोग दोनों संस्थान मिलके जो इस नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन किए हैं, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा संदेश इस मुहिम से, इस इंटरनेशनल वीमेंस डे के ओकेजन पे आयोजित इस प्रोग्राम से एक अच्छा संदेश जा रहा है. अब समय आ गया है कि वोट ऑफ थैंक्स करने का. भारतीय परंपरा में सभी कार्यक्रम का एक आभार ज्ञापन की परंपरा होती है और हमारे लगातार आयोजन में डॉक्टर वसीम रशीद साहब अलग अलग समय में हम लोगों का जितने प्रोग्राम्स हुए हैं, वोट ऑफ थैंक्स की जो आभार ज्ञापन का जो दायित्व है अच्छे से निर्वहन करते हैं. तो मैं इसी आशा के साथ डॉक्टर वसीम रशीद साहब को आमंत्रित करना चाहूँगा. स्वागत है डॉक्टर वसीम जी.
थोड़ा सा आप अपना ईयरफोन निकाल देंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा आवाज़ आएगा। ईयरफोन निकाल दिया जाए प्लीज़। हाँ, ईयरफोन निकाल, और मोबाइल से उसका हुक भी निकाल दीजिए, जो मोबाइल में अटैच्ड उसका हुक था, ठीक है जो सर। सॉकेट था ओके उसका। सर। जी प्लीज़, हाँ जी, ज़्यादा अच्छा है प्लीज़ जी। थैंक यू। Be respectful to women, for they are the mothers of mankind. Thank you, sir. First of all, a very good evening to our most valued and worthy chairperson, Honorable Vice-chancellor, Cluster University of Jammu, Professor Bechan ji, and our distinguished resource persons, Dr. Sushma Trivedi ji, Senior Associate Professor, University of Lucknow, and other distinguished resource person, Dr. Veenu Pant ji, Head Department of History, Sikkim University. I would like to express my gratitude to Dr. Sindhu Kapoor, Dean School of Social Sciences, Cluster University of Jammu, and our moderator of this today's session, Dr. Anant Ashutosh Trivedi ji, Director General, Heritage Society, Patna. I, Dr. Wasim Rashid, on behalf of School of Social Sciences, Cluster University of Jammu, and Heritage Society, Patna, want to express my most sincere thanks to our distinguished speakers who gave us their vital time for today's session and lecture on role of women in preservation of our culture, and for their support and cooperation in making this one-day webinar successful. We are also thankful to you for this valuable information on role of women in preservation of our culture. We hope that this presentation will be a source of inspiration for us. And once again, we would like to state that we are glad to all of for being present in this today's national webinar, and we are thankful for being with us. And it remained a pronounced pleasure. Thank you and good night to everyone. Over to Ashutosh ji. थैंक यू सो मच वसीम। मुझे लगता है कि हमें अपने कोलैबोरेटर हेरिटेज सोसाइटी पटना का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए, क्योंकि उनके माध्यम के द्वारा ही हम सब आपस में मिल पाते हैं और हम अपने बच्चों के लिए ये एक्सटेंसिव एक्टिविटीज ये ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। तो हेरिटेज सोसाइटी का और पर्टिकुलरली डॉक्टर अनंत आशुतोष जी का ये शायद बहुत लोगों को नहीं मालूम है कि आज वो इतने ज्यादा हार्ड प्रेस्ड थे और किन स्थितियों में उन्होंने हमारे लिए ये प्रोग्राम का आयोजन किया है। तो मैं उनका हृदय की गहराइयों के साथ मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर आशुतोष जी और आपकी पूरी टेक्निकल टीम का। यू आर ऑलवेज एट अवर बैक। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस वेरी एक्टिविटी। और हमारे रिसोर्स पर्सन्स, और जैसे डॉक्टर वीनू पंत ने और डॉक्टर सुषमा त्रिवेदी ने अपने वक्तव्य में बहुत बखूबी बताया है कि इंटेंजिबल हेरिटेज और विमेन की जो रोल है उसको एस्टैब्लिश करने के लिए मुझे लगता है ये एक तरह का बहुत बड़ा ऐसा हवन है जिसमें हम सबको आहुति देनी है। ये ऐसा महायज्ञ है जिसमें हम सबको मिलकर उसको परिपूर्ण करना है। तो डॉक्टर वसीम राशिद, आपका भी धन्यवाद। थैंक यू मैडम। अब एक अपने तमाम जो दर्शक हमारे साथ पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं ऑनलाइन सेशन में, उनसे एक मैसेज कन्वे करना चाहेंगे। स्टूडियो से मैसेज भी आ रहा है कि जो जहां से इस लिंक को देख रहे हो, चाहे यूट्यूब देख रहे हो, फेसबुक पे देख रहे हो, ट्विटर पे देख रहे हो, जहां से भी आज के इस प्रोग्राम को देख रहे हो, वहां पे जाएंगे तो फीडबैक लिंक एक ऑप्शन आएगा, उसके वीडियो का जो टेक्स्ट होता है उसकी डिटेल्स में। तो उस वीडियो के टेक्स्ट का जो फीडबैक लिंक है उसे जरूर फिल करें, और यह आज ही फिल करना है। कल यह लिंक नहीं एक्टिव रहेगा, आज रात तक, कि ताकि आपके रजिस्टर्ड ईमेल, जो आप ईमेल डालेंगे उसमें ईमेल आईडी, तो उस पर आपका ऑटोमेटिक तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा, ऑनलाइन सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। तो आप सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है आप उसको जरूर भरें और फीडबैक लिंक जरूर दें, ताकि हमारा आयोजन कैसा रहा, इसमें आने वाले समय में क्या इसमें और सुझाव की जरूरत है और क्या बदलाव की जरूरत है। हम जो लगातार आयोजन करते हैं, क्या आपसे सीख हमें मिल रही है? तमाम दर्शक जो जहाँ जहाँ से देख रहे हैं, हर एज ग्रुप के ऑडियंस हमारे साथ हैं, हमारे साथ मंच पे जुड़ते हैं इस आयोजन में। तो आप जरूर अपना सुझाव जरूर दें, ताकि आने वाले समय का अगला एकेडमिक सेशन किस तरह का हो, कौन से विद्वान हमारे साथ जुड़े और उनका संबोधन आपके बीच हम लेके आए। तो आप सभी को सादर प्रणाम और सभी को धन्यवाद, आप लोग जुड़े। अब इसी के साथ आज के तमाम डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर्स, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी और वोट ऑफ थैंक्स डॉक्टर वसीम राशिद जी की अनुमति से आज के इस सत्र को यही विराम देना चाहेंगे। सबको सादर प्रणाम।